So good evening everyone. So today we are coming with the second lecture of Ignou MCS-225, or you can say Eco 01, because this lecture is common to both the papers. Eco 01, Eco 02. It is common to both the lectures because it consists of theory things, theory topics. Those are important from the examination point of view. You should go through this because this will come in the examination. And as we all know that you all as well as me are not the candidates of accountancy, or you can say commerce background. So we have to go through these concepts. If you do not go through these concepts, you won't understand anything. I'm telling you. This is the second lecture, and after this, we'll be coming with the numericals, and that will be different for both the topics. MCS 225 is a bit high standard. Yeah, the mathematics, the accountancy questions that are coming in the examination are of graduation level, and the questions that are coming in Eco 02 are of class 12 level. So the lectures will be different from lecture 3. Okay, for lecture 2, because it consists of the theory concept. So the lecture is common, because here also the questions are coming in the examination. The type of the topics we are discussing is a very important from the examination point of view for both MCS 225 and Eco 02. Okay, so without any further delay, let's start the lecture. The first and the most important question they are going to ask is, what is bills of exchange? Bills of exchange or bill of exchange, you can say. ये क्या है? Okay, what is bill of exchange? Okay, and what is promissory note? So first we are going to understand what is bills of exchange. Okay, this is very important. So we should understand what is bills of exchange. Hmm. The bill of exchange क्या है? It is also known as a draft. It is known as a draft. Also known as also known as draft. Okay, also known as draft. अब क्या draft? आप लोग को whenever you go for appear for the examination का form आप लोग भरते हो. Everybody goes for filling the examination before appearing for the examination. आप exam form fill करते हो, उसमें कुछ dates होते हैं. There is a last date also. When you cannot fill the when you fail to fill the form in the last date, then you can go to the center or the RC regional center, and over there they are going to ask you that fill a draft. Okay, demand draft, and with the fine you will pay the fee through the demand draft. So the bank will make the demand draft. You are going to pay the money, and bank will pay the demand. Will make the demand draft, and what you will do? You will give the demand draft to Ignou center, Ignou RC, or the study center, and they are going to allow you to appear for the examination. इसको बोलते हैं ड्राफ्ट. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ड्राफ्ट है. ठीक है. बैंक की बैंक कौन है? बैंक बीच में बोलने वाला बंदा है. बैंक. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. क्या है? ऑल्सो नोन एज ड्राफ्ट. इट इज एन ऑर्डर. इट इज a written order. It is a written order. It is a written order used primarily in used primarily in international trade. International or national भी बोल सकते हैं. National trade or national trade that instructs one party to pay one party to pay a fixed sum of money, a fixed sum of money to another party at a specific date
at a specific date or on demand, or on demand. जब भी वो ड्राफ्ट प्रेजेंट करेगा तो ही इज गोइंग टू गेट द मनी, दैट द थिंग। ओके, तो इसमें क्या क्या है, इसमें पार्टीज इन्वॉल्व इन, parties involved in bills of exchange, parties involved in bills of exchange। कौन कौन सा पार्टी है? एक है ड्रॉयर, फर्स्ट इज ड्रॉयर। अब ड्रॉयर क्या करेगा? वो क्रिएट द बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्रिएट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्रिएट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इंस्ट्रक्ट द पेमेंट। जैसे एग्जांपल ले लो आप खुद, तो आप हो गया ड्रॉयर। ओके, आपने क्या क्या इंस्ट्रक्ट किया, आपने बैंक में बोला जो आप इसके डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, तो यू आर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे द अमाउंट। ओके, नंबर टू इज ड्रॉई। अब ड्रॉई क्या है? द पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड, द पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड टू पे द स्टेटेड अमाउंट। जैसे बैंक, स्टेटेड अमाउंट। तो यहाँ पे क्या ड्रॉयर में कौन है? ड्रॉयर में है, एग्जाम्पल ले लो, यू, आप जो मीन्स आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, तो यू यू आर द ड्रॉयर। ओके, और इसमें यदि एग्जांपल ले लोगे तो बैंक। ओके, नंबर थर्ड, एक है पेई। पेई, पेई क्या है? द पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। एग्जांपल ले लो, आपने इग्नू में पे कर रहे हो तो इग्नू यू कैन से। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू एक्सप्लेन। अंडरस्टूड? अब नाउ व्हाट विल डू, ये तो क्लियर हो गया जो व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, promissory note। नाउ यू कैन डिस्कस अबाउट promissory note। अब promissory note क्या है, देखते हैं व्हाट इज promissory note। जैसे एग्जांपल ले लो, वी कैन टेक एग्जांपल आल्सो। ओके, जैसे मीन्स फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द थिंग। रिटन प्रॉमिस टू पे, promissory note क्या है? रिटन प्रॉमिस, रिटन प्रॉमिस, रिटन प्रॉमिस टू पे स्पेसिफिक, टू पे स्पेसिफिक sum of money, specific sum of money at a future date, at a future date। ओके, फ्यूचर डेट में स्पेसिफिक सम ऑफ मनी देने के जो प्रॉमिस करते हैं वो उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। इसमें पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? पार्टीज इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, नंबर वन, एक है मेकर जो प्रॉमिस करते हैं, मेकर जो प्रॉमिस करते हैं उसको मेकर बोलते हैं। इशूज द नोट, इशूज द नोट promising to pay the pay, promising to pay the pay। Number two, pay, the party entitled,
the party entitled to receive the payment. But that's all. Suppose suppose Raju has promised somebody that he is going to pay the amount on a specific date. So Raju is the maker, okay, because he is making a promise, okay, and pay on suppose Sham is the pay. Yeah, he is entitled to receive the payment. So he is the pay. And hope you understand. अब यहाँ पे एक एक और चीज, ये जो है दिस वन, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस हमें जानना है। दोनों के डिफरेंस के लिए लेफ्ट राइट इट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक तरफ प्रॉमिसरी नोट। इसमें क्या है, ऑर्डर टू पे, ओके, यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस टू पे। नंबर टू, इसमें कौन कौन सा पार्टीज इन्वॉल्व है, ड्रॉयर, ड्रॉई और एक है पेई। और यहाँ पे कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है, मेकर एंड पेई। जो प्रॉमिस करते हैं उसको मेकर बोलते हैं, और पेई जिसको पैसे पाना है, जो हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द अमाउंट, पेई, ओके। अब ये जो है डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट जैसे आप बनाते हो तो इसमें बहुत सारा कॉपीज होता है, बैक में भी एक कॉपी देते हैं, कैन है मल्टीपल कॉपीज, कॉपीज। और ये प्रोमिसरी में क्या है, ओरिजिनल कॉपी होते हैं, कोई मल्टीपल कॉपी नहीं होते, ओनली वन ओरिजिनल कॉपी, ओनली वन ओरिजिनल कॉपी। फोर्थ, ऐसे यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो यू कैन से इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग, जैसे फोरेक्स, फोरेक्स में आप यूज कर सकते हैं ऐसे, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग। और इधर क्या है, डोमेस्टिक लोन्स, डोमेस्टिक लोन्स हो सकते हैं या पर्सनल लोन, यू कैन से पर्सनल लोन, मैंने कोई फ्रेंड्स के बीच में भी लोन, देयर कैन बी अंडरस्टैंडिंग दैट मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, एंड द अदर पर्सन इज प्रॉमिसिंग दैट आई एम गोइंग टू पे यू द मनी बट ऑन ए स्पेसिफिक डेट, तो दैट्स द थिंग, तो उसको पर्सनल लोन मैंने बोल दिया, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हमेशा, दे आर गोइंग टू आस्क एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस नाउ, स्टेट द ट्रांजेक्शंस recorded in, state the transactions recorded in bills receivable, बिल्स रिसीवेबल इसको बी आर बोलते हैं, एंड बिल्स पेएबल बी पी बोलते हैं, एंड बिल्स पेएबल इसको बी पी बोलते हैं, ओके। क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में। अब पहले तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल एंड व्हाट इज बिल्स पेएबल, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बिल्स रिसीवेबल, व्हाट इज दिस बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में बी है। अब ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है, दिस बुक, आई एम राइटिंग इट, दिस बुक records bills of exchange, records
बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मैंने पहले अब थोड़ी देर में डिस्कस की, ड्राफ्ट ईपन से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, the bills of exchange that the company holds, that the company holds and expects to receive payment. Okay, इसका मतलब क्या है? दिस बुक रिकॉर्ड्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट द कंपनी होल्ड्स। माने क्या है? ये एग्जांपल ले लो इग्नू। ये इग्नू के पास वो पैसे होल्ड में, वो जब वो प्रेजेंट करेगा बैंक में, देन ओनली ही इज गोइंग टू गेट द अमाउंट। तो वो क्या हो गया? वो बिल्स रिसीवेबल बुक है वो इग्नू की। ओके, इसमें ट्रांजेक्शन क्या क्या है? ट्रांजेक्शन इंक्लूड एक होता है डेबिट बियर। ओके, और एक क्रेडिट बियर। डेबिट बियर, व्हाट इज दिस डेबिट बियर? when company when company receives a bill of exchange, receives a bill of exchange, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बीओई करके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम ए कस्टमर, फ्रॉम ए कस्टमर एज पेमेंट, एज पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, so what happens actually जब आप डिमांड ड्राफ्ट, when you are presenting the demand draft to the to इग्नू, तो एक क्या होते हैं, वो तो क्रेडिट में हो गया क्योंकि इंस्टेंटली उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इग्नू वोंट गेट दैट मनी इंस्टेंटली। ओके, इट विल गेट आफ्टर सम, आफ्टर 4 days और 5 days। ओके, बैंक इग्नू के अकाउंट में डाल देंगे। ओके, तो वो क्रेडिट में ही हो ना, क्रेडिट में ही आपको परमिशन दे दिया गया, जो मीन्स यू कैन अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। माने वो एक टिक करके आपको आपकी नाम, your name has is forwarded to the examination department, that you can that you are eligible for to appear for the examination. So that's not a debit BR। होप आप लोग को क्लियर हो गया। अब होता है क्रेडिट BR। क्रेडिट BR, अब यहाँ पे क्या होता है? when the company when the company when the company collects payment, collects payment collects payment on the bills of exchange, on the bills of exchange। वो किससे कलेक्ट पेमेंट, पेमेंट कहाँ से कलेक्ट करेंगे उस पेमेंट को? इट विल कलेक्ट, इट विल कलेक्ट, इट मतलब कौन? इग्नो विल कलेक्ट फ्रॉम बैंक, जो भी बैंक की आपकी डिमांड ड्राफ्ट है, दैट्स द थिंग। ओके, अब एक है बिल्स पेएबल। होप आप लोग क्लियर हो गया जब बिल्स रिसीवेबल क्या है। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट बिल्स पेएबल। हाँ, ओके, इसमें एक और पॉइंट है, यू शुड नो अबाउट इट। और इम्पोर्टेंट थिंग, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी हो सकता है जब मीन्स कभी डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर हो जाता है। कैसे डिसऑनर हो जाते हैं? कुछ स्पेलिंग में कुछ जैसे इग्नो आरसी आपने लिखे, या तो इग्नो, इग्नो का आई कैपिटल है, GNOU ये सारे स्मॉल है सपोज। ओके, एंड ऑल यू हैव डन इन कैपिटल। तो फिर क्या होगा जब वो इग्नो आगे जाके फॉरवर्ड करेगा बैंक के सामने, बैंक बोलेंगे कि स्मॉल कैपिटल आई है और GNOU स्मॉल है, लेकिन आपके अकाउंट में क्या है? सारे कैपिटल पहले होते थे ये सारी चीजें। अंडरस्टूड? और अभी भी होते होंगे, आई डू नॉट नो, बट ऐसे होते थे। तो फिर क्या करेगा? उसको डिसऑनर कर देगा। बैंक विल डिसऑनर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और फिर कंपनी क्या करेगा? कंपनी मतलब इग्नो,
it will write it off as a bad debt. Bad debt मतलब क्या हो गया, आप एग्जाम में अपियर नहीं हो सकते. This is also a thing, keep in mind, and you can write it. Okay, just write it. Now we will discuss about bills payable. Bills payable. BP book. अब इसमें क्या होता है? This book, this book records bills of exchange, bills that the company owes, that the company that the company owes and needs to pay, and needs to pay in the future. फ्यूचर में पेमेंट करना है. एग्जाम्पल ले लो, जो मैं डिस्कस कर रहा था, बैंक, यू कैन से बैंक को पे करना है. दैट्स द थिंग. अब इसमें डेबिट बीपी होता है, एक होता है क्रेडिट बीपी. ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन इंक्लूड डेबिट बीपी, इंक्लूड डेबिट बीपी. अब डेबिट बीपी क्या होता है? डेबिट बीपी, you can say one thing, that when the company issues a bills of exchange to a supplier as part of an agreement to pay for goods or services received on credit, company receives issues a bill of exchange. कंपनी कौन बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है? वो ड्राफ्ट कौन इशू करता है? ये बैंक करते हैं. ठीक है, टू ए सप्लायर. तो सप्लायर कौन सा है? सप्लायर कौन है? इग्नू. इग्नू के नाम पे जब वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? एक एग्रीमेंट हो गया. ये आप क्रेडिट, आपके नाम पे एक वैल्यू है जो आपको फ्यूचर में मिल जाएंगे. इन फ्यूचर वेन एवर इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन. पर्सन मतलब क्या? आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? कंपनी एक इशू करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज अ डिमांड ड्राफ्ट, टू ए सप्लायर. सप्लायर कौन है? जिसको एग्जाम्पल सप्लायर इग्नू है, इग्नू के नाम पे कर देंगे. ऑन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या है? जो मीन्स इसको क्या ये क्रेडिट में अमाउंट इज देयर इन द बैंक, और वो क्रेडिट में है. वो जब मीन्स जब एक बंदा, सपोज राजू विल फॉरवर्ड द डिमांड ड्राफ्ट टू इग्नू, तभी उसको वो पैसे मिलेंगे. उसको बोलते हैं डेबिट बीपी. एक होता है क्रेडिट बीपी. क्रेडिट बीपी. अब क्रेडिट बीपी क्या होता है? हाँ, जब कंपनी क्या करता है, पूरा पेज द बिल ऑफ एक्सचेंज. जब पे कर देता है पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज, किसको? इग्नू को पे कर देता है. बैंक जब पे करता है उसको बोलते हैं क्रेडिट बीपी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेरिट? व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड? रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड. इसको मैं सिंपल दो लाइन में पहले बताता हूँ, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है. सपोज आपके पास एक, यू आर रनिंग ए कंपनी, तो आपके यू पीपल आर हैविंग लैपटॉप्स. लैपटॉप्स तो जरूरत होता है, लैपटॉप्स या डेस्कटॉप. तो उसके एवरी ईयर क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है, सपोज यू बॉट दैट लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉर 40,000, एंड यू आर हैविंग 10 लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स. ओके, तो 40,000 जो है, नेक्स्ट ईयर में क्या, 40,000 इंटू 10 यदि आप करोगे तो इट्स 4 लाख. तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 10% डिप्रिशिएशन होगा. 10% या 20%. सपोज 10% डिप्रिशिएट हुआ, तो कितना हो गया? वो 36,000 का हो गया. ओके, नेक्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू. ओके, क्योंकि 4%, 4% 40. ओके, 40% है और 10% डिस्काउंट किया मैंने.
40,000 में 10% 4,000, तो 4,000 जो भी है, ओके, तो क्या हो गया 36,000 के, तो 36,000 डिप्रिसिएट वैल्यू हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया 20% हो गया, तो क्या होगा 20% ऑफ 36,000। उसके बाद थर्ड ईयर में और डिप्रिशिएट होगा 30%, उसके बाद 40%, उसके बाद 50%, उसके बाद 70%। तो ये जो एवरी ईयर जो एक वैल्यू गिरते जा रहे हैं, उसके वैल्यू जो मीन्स रिवाइज होते जा रहे हैं, डिप्रिशिएशन डिप्रिशिएट हो रहा है उसके वैल्यू, तो उसको बोलते हैं राइटिंग डाउन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एवरी ईयर चेंज हो रहे हैं, कभी फर्स्ट ईयर में 10%, सेकंड ईयर में 20%, थर्ड ईयर में 30%, फोर्थ ईयर में 40%, फिफ्थ ईयर में 50%, इन दैट वे। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एवरी ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका जो ये है मीन्स डिप्रिशिएशन का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी 10% है, नेक्स्ट ईयर 20% है, फिर 30% वो है। और स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन मतलब ये है, यू आर हैविंग द लैपटॉप, एवरी ईयर 4% ही ये हो रहा है, 4% या 10% एवरी ईयर डिप्रिशिएट हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 10%, सेकंड ईयर में भी 10%, थर्ड ईयर में भी 10%, फोर्थ ईयर में 10%, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, दिस दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट डिप्रिशिएशन, उसमें भी डिप्रिशिएट होता है, लेकिन फिक्स्ड रेट में, फिक्स्ड वैल्यू। ओके, फिक्स्ड वैल्यू। उसमें जैसे राइटिंग डाउन वैल्यू मेथड में क्या है, अलग अलग है ना, फर्स्ट में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। ओके, नाउ लेट मी राइट आउट द थ्योरी, जो आपको जानना है ये भी आप लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ आई विल राइट डाउन द थ्योरी। Written down value method. Written down value. I am writing it in short. WDV is a technique. Is a technique used in accounting. Used in accounting to estimate the current value. To estimate the current value of a depreciable of a depreciable asset. Depreciable asset of a depreciable asset such as machinery. जैसे मैंने लैपटॉप या डेस्कटॉप के बात बोली, ठीक है, कॉमा इक्विपमेंट और बिल्डिंग। ओके, अब written down value equal to written down value method equal to original cost minus accumulated depreciation. Depreciation. ओके, अब होप आप लोगों को क्लियर हो गई है। ये क्या होता है, एवरी ईयर ये चेंज होते हैं। ठीक है, एवरी ईयर क्या होता है, ये चेंज होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, इसके मैं डिफरेंस बाद में लिख रहा हूँ, पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे क्या है, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड a constant amount, a constant amount of depreciation is charged each year, is charged each year, each year over the assets useful life, over the assets useful life। जब तक उसके लाइफ है तब तक वो ऐसे करके होता है। ओके, अब दोनों का डिफरेंस, they are going to ask the difference, written down value method or straight line method। So let us write it, written down value method और एक है straight line method।
इसमें क्या है, हायर इन अर्ली ईयर्स, लोअर इन लेटर ईयर्स. Okay, lower in later years. Example, let us take an example. Suppose आपके पास you have a mobile phone. Okay, let us take a real life example. That would be better for you. You have bought a mobile phone. Okay, 6 महीने बाद you thought कि चलो इस फोन को let us sell it. Okay, 40,000 का फोन है, आपको सेल करना है. So how much you will get? Think about it. You will get 25,000, maximum 25, not more than that. 25. ओके 25 में यू कैन. ओके आपने बोला कि 6 महीने में नहीं, मैं 2 साल में बेचूंगा. 2 साल बाद अपने दिमाग में आया कि मुझे बेचना है. ओके 40,000 की फोन. ओके एंड 40,000 का फोन का अभी वैल्यू कितने हैं? सपोज आप इफ यू वांट टू गो टू द मार्केट तो देयर यू कैन सी दैट 35,000 में फोन मिल रहा है. तो फिर वो आप लेकिन आप 40,000 में लिए, ठीक है, फॉरगेट अबाउट 35,000. 40,000 में लिए. फर्स्ट ईयर आप यदि 6 महीने में बेचना चाहो 25,000 में आपको बिक रहा है. आप ये 2 साल बाद कर रहे हो 20,000 में आपका बिक रहा है. तो क्या हो रहा है, डिप्रिशिएशन वैल्यू क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. लेकिन आप ज़्यादा दिन यूज़ करके जब उसको बेचो क्या हो रहा है, डिप्रिशिएशन वैल्यू कम हो रहा है. अंडरस्टूड. तो फिर क्या हुआ, तो दिस इज द सेम ओवर हियर. ओके पहले 6 महीने में यदि बेचोगे तो ज़्यादा लगेगा. लेकिन यदि आप 10 साल 5 साल बाद बेच रहे हो, एग्जाम्पल ले लो, 5 साल बाद 40,000 का फोन है, 40,000 का लेटेस्ट है, 40,000 का फोन है, आप 5 साल बाद बेचोगे. ओके 40,000 का फोन. अब क्या होगा, जब आप मीन्स बिग बिलियन डेज आते हैं इन इन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, वहाँ पे जब बेचोगे तो देखोगे 40,000 का ये जो फोन है, इसमें आपको मिल रहा है 20,000 की. 20,000 का एक्सचेंज वैल्यू, 20,000 की एक्सचेंज वैल्यू प्लस 20,000 की एक्सचेंज वैल्यू प्लस यू आर बाइंग इन न्यू वन. तो क्या हो रहा है, व्हाट यू आर थिंक, तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में यदि आप बेचना चाह रहे थे आपको 25 में आपको मिल रहा था. ओके 25 आपको मिल रहा था. आप 5 साल बाद कर रहे हो तो 20,000 आपको मिल रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं ना, lower in the latter years, later years. So that's what I'm saying over here. Okay. Now we are going to discuss here. यहाँ पे क्या होगा, constant amount each year, constant amount each year, every year constant amount 10,000 करके एक बैलेंस होगा और कुछ नहीं. ओके यहाँ पे क्या है, नंबर 2, इनकंसिस्टेंट. यहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते हो. और यहाँ पे क्या, कंसिस्टेंट. यहाँ पे क्या है, नंबर 3, मे ऑफर टैक्स बेनिफिट्स. यहाँ पे क्या है, नो टैक्स बेनिफिट्स. ओके ओके नंबर 4, more realistic, more realistic for assets. Okay, more realistic with higher with higher usage in earlier years. हाँ यहाँ पे क्या है, doesn't reflect usage pattern. मतलब क्या, मीन्स क्या है, सपोज एवरी ईयर आपका कॉन्स्टेंटली एक ही रेट से आपका डिप्रिशिएट हो रहा है. तो फिर आप कम, यू आर यूजिंग इट इट मोर, यू आर यूजिंग इट लेस, और यू आर नॉट यूजिंग, इट डजेंट मैटर एट ऑल.
इन स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन राइटिंग डाउन वैल्यू मेथड में क्या है, ज़्यादा यूज करोगे तो फिर क्या होगा, इट देयर विल बी वेर एंड टियर, उसका वैल्यू ज़्यादा गिरेंगे भी, दैट इज ऑल्सो देयर इज सम, तो द वैल्यू विल डिक्रीज रैपिडली, यू कैन से, ओके, वेर एंड टियर पे रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे नथिंग इज देयर स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो which one you will choose, written down value method or straight line method? You must choose, choosing की यदि बात है तो choose straight line method, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों, इसमें जितना यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फिक्स रेट में आपका डिप्रिशिएट होता रहेगा, दैट्स व्हाई यू चूज स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ टू कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड वन इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, दो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, विल बी डिस्कसिंग। लेट अस स्टार्ट। एक होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है, सेम अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसीज, यदि आप एवरी ईयर आप यू आर यूजिंग द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ओके। Using, let me write it, using the same accounting method or policies every year, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी है उसमें, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है, इफ यू आस्क द बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स, नंबर वन, रिलायबिलिटी, क्योंकि एवरी ईयर सेम चीज आप यूज कर रहे हो, तो यू नो दैट मीन्स क्या रिजल्ट आने वाला है, तो यू नो वेरी वेल, ओके। और द पॉलिसी, इफ यू यूज द सेम पॉलिसी, तो यू नो व्हाट विल बी द रिजल्ट, ओके। तो रिलायबिलिटी, एक रिलायबल होता है, नथिंग न्यू ना, यू आर यूजिंग द सेम थिंग, तो एक रिलायबल हो जाता है, एक भरोसा हो जाता है। एंड नंबर टू, एफिशिएंसी, क्योंकि इफ यू आर यूजिंग द सेम मेथड और कॉन्सेप्ट एवरी ईयर, तो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली यू विल बी एफिशिएंट, फास्ट आप लोग करने लगोगे, दैट्स व्हाई एफिशिएंसी, ओके। होप आपको क्लियर हो गया। नाउ one more important concept is full disclosure concept, full disclosure concept। अभी फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या है, हम्म, तो एग्जाम्पल इसको मैं डेफिनेटली यदि बोलूँ, द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट मैंडेट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड। कोई बंदा है, उसको सारे, जब मीन्स सपोज ये न्यू अकाउंटेंट इज बीइंग अपॉइंटेड, ओके, तो he should understand, he should be given all the necessary information about the company, okay, so that he can work, so that he can understand the company's financial position, performance and cash flows. Understood what I mean to say? Suppose I am appointing a new accountant because the old accountant has gone, is gone. He has gone, he has left it. Okay. So the new accountant should be provided all the necessary information. ठीक है, ऑल द व्हाई द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज कैसे वो बोलेगा कि क्या चल रहा क्या नहीं कंपनी, अंडरस्टूड, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कैश फ्लोज कितने आ रहे कितने जा रहे, ऑल दिस एवरीथिंग टू बी एक्सप्लेन टू हिम, देन ओनली ही कैन वर्क प्रॉपर्ली, तो दैट्स द थिंग, तो उसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करना पूरी हर बात को डिस्क्लोज करना उसके सामने, अकाउंटेंट के सामने, यू कैन राइट इट ऑन योर दिस थिंग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
Under what circumstances? Under what circumstances? Would an accountant, would an accountant prepare bills receivable account? Bills receivable, BR में लिख रहा हूँ account. Okay, ये accountant है और ये account है. Okay, this one is account. Okay, and bills payable account. Bills payable account. While preparing, while preparing final accounts, final accounts from incomplete records. Okay, this is the question. So आप आपको bills receivable, bills payable already I have explained. So under what is would an accountant prepare? कैसे prepare करे from incomplete records? This is a very important thing. Okay, now incomplete records क्या है? Let us understand this thing. Incomplete records. That's also thing, ना? Incomplete records है क्या? That is important. इनका मतलब बिल के बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन एविडेंस है. देयर इज एविडेंस ऑफ बिल. एविडेंस ऑफ बिल एग्जिस्ट. ओके, देयर इज ए प्रूफ दैट देयर इज ए बिल. सिंपल. इसमें क्या है, मैं थोड़ा ऐसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ. देन ओनली वी विल गो ऑन राइटिंग. ओके, तो क्या है यहाँ पे एक सिचुएशन ये है. द बिजनेस रिकॉर्ड माइट बी इनकम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेल्स. इनकम्प्लीट कैसे, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेल्स हो सकते हैं एंड एक्सपेंसेस. But there is clear evidence of bills of exchange being issued or received. Bills of exchange issue और या रिसीव किया उसका एविडेंस होंगे हमारे पास. लेकिन एवरीथिंग इज नॉट. बट लेकिन क्या हो, जितने आए जितने गए वो मैंने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया. डॉक्यूमेंटेड. ओके, मैंने उसको ये नहीं किया, राइटिंग में नहीं रखा. ठीक है, बट द एविडेंस इज देयर. तो दिस एविडेंस वुड कम फ्रॉम, कहाँ से एविडेंस आएंगे? कॉपीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज काफ़ी होते हैं. ठीक है, मल्टीपल कॉपीज होते हैं. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट थिंग. बैंक स्टेटमेंट शोइंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, बैंक स्टेटमेंट से ही पता चल देंगे. एंड कम्युनिटी रिकॉर्ड इंडिकेटिंग एग्रीमेंट्स टू यूज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कम्युनिटी रिकॉर्ड, ये तीन टाइप का रिकॉर्ड होता है. कौन कौन सा होता है? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं. ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉपीज, कॉपीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉपीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नंबर टू इज बैंक स्टेटमेंट. एंड नंबर थ्री इज कम्युनिकेशन रिकॉर्ड. यहाँ से वो क्या करेंगे, इजीली वो निकाल पाएंगे. अंडरस्टूड. तो यहाँ से वो डेटा निकाल के तो फाइनल अकाउंट में वो उसको अपडेट कर सकते हैं. अंडरस्टूड, होप आप लोग क्लियर हो गए. नाउ वेट फॉर सेकंड. सेम विद द बिल्स ऑफ पेएबल आल्सो. ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है. बैंक स्टेटमेंट तो होंगे ही आपके पास. वो आप लोग क्लियर है. नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. होप आप लोग को ये वाला लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया था. सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल बुक एंट्री, और एक होता डबल बुक एंट्री.
से आप लोग just go through the theory that I have already explained. Okay, just go through the theory, and in the next class we will be discussing the numericals. Okay, and numericals will be different for both eco 02 and MCS 225. The lecture will be different. Okay, so we'll be coming with the lecture 3 very soon. Thank you. All the best. Bye and take care.